सुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते वेदव्यासस्वामी प्रांत नामने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातवहं वन्दे श्रीगुरून् तीं तारणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वर. So please bless me, devotees, and please pardon me for any offenses that I do. And please add on, just unmute and add on whatever points I have missed. And if there's any questions, just we'll start from there only. So we'll start with verse number 11. I'll just try to attempt to recite this one. So we just revise what is happening in Srimad Bhagavatam. So it is all still connected to that initial question, the first six questions. Why did Bhagavatam, in who, after Lord Krishna left, in whose sharan did Dharma go? So it went into the shelter of Srimad Bhagavatam. Then how, the next question was, how did Srimad Bhagavatam come into place? Then the pastime of Vyasdev and Narad Muni was discussed. And then still, because Bhagavatam appearance is connected intimately with Parikshit Maharaj's appearance and then his demise. And that's where it is that, in order to tell that story, we were discussing how Dhritarashtra left and then how Yudhishthira Maharaj ruled and ultimately Lord Krishna, he also left this planet. So this is the pastime going on. युधिष्ठिर saw bad omens happening and he's asking why is ये क्यों हो रहा है, इतना सब कुछ खराब चीज क्यों हो रहा है. एंड अर्जुन इतने दिनों से गए हुए हैं कृष्ण भगवान के पास द्वारका में, पर वो आए नहीं, कोई न्यूज नहीं है. एंड नाउ वी सी अर्जुन इज हियर एंड ही इज स्पीकिंग, ही इज वेरी मोरोस, बहुत उदास है, बहुत सैड है वो. एंड ही इज सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन. एंड इन टेक्स्ट, एंड एनीबडी एल्स वांट्स टू ऐड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द रिवीजन? क्या इंपॉर्टेंट था जो पिछली बार डिस्कस किया था प्रभु ने? Any devotee want to say any very standing out points? Otherwise, we'll start with the verse. So, Yono Jugopavana Etya Duranta Krichrad Durvasasori Rachitad Anuyagra Bhuhya Sakanna Shishtam Upayujya Yatastrilokim Triptamamasta Salile Vinimagna Sangaha. Shiva Prabhu, can you please read this one? And from the next one, if you can please request devotees to read the verses, translations. Yes, sure, Prabhuji. During our exile, Durvasa Muni, who eats with his 10,000 disciples, intrigued with our enemies to put us in dangerous trouble. At that time, he, Lord Krishna, simply by accepting the remnants of food, saved us. By his accepting food, thus, the assembly of Munis, while bathing in the river, felt sumptuously fed, and all the three worlds were also satisfied. Jai, Shri Prabhat ki jai. Thank you so much, Prabhuji. So this is so amazing verse. So in this verse, Arjun is remembering जब ये लोग वनवास वनवास में थे तो क्या हुआ था. दुर्वासा मुनि इज शिवांश एंड ही इज नोन टू बी वेरी एंग्री. समटाइम्स ही कैन बिकम वेरी एंग्री and he can be pleased very easily also. So Durvasa Muni, he went to Duryodhan with his 10,000 disciples, and Duryodhan very nicely he served Durvasa Muni. And Duryodhan is very cunning, you know. And on Shakuni Mama's advice, what he said was, he said, आपने मुझे, दुर्वासा मुनि को बोला दुर्योधन ने, कि आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया सर्विस करने का, पर मेरे बड़े भैया है युधिष्ठिर, वो तो जंगल में है, उनको भी मौका दीजिए, नहीं तो पार्शियलिटी हो जाएगा. एंड द टाइमिंग वाज सच दैट ही न्यू. सो युधिष्ठिर, द्रौपदी माता वाज गिवन अक्षय पात्र बाय सूर्यदेव. अक्षय पात्र में द स्पेशलिटी वाज दैट अक्षय पात्र विल कीप ऑन प्रोड्यूसिंग फूड until the point that the lady of the house Draupadi Mata eats food. It will keep on producing unlimited amount of food. And that Akshay Patra was instrumental in the Vanvas because they couldn't cook properly, and so
Now, Duryodhan knew this, that they have Akshay Patra, and he knew that at this time it is their lunch time, and after that, Akshay Patra, Draupadi will eat, and then it won't work. तो उसने very cunningly he timed the situation so that he sent Durvasa Muni to Yudhishthir on the pretext कि आप उनको भी सेवा का मौका दो. At that time when Draupadi Mataji has already eaten. So Durvasa Muni comes with his 10,000 disciples, and he is in front of Yudhishthir's kutia, and he says, I'm here for serving. I've got 10,000 disciples. So I'm just going to the river and to take a bath, and after we come, then you can serve us. Yudhishthir Maharaj is worried because he knows that lunchtime is over. Draupadi Mata has already eaten, and Akshapatra will not produce anything until dinner time now. So great problem. So he tells Draupadi Mata immediately she absorbs in praying to Lord Krishna because everybody is afraid of Durvasa Muni. She's praying to Lord Krishna, Bhagwan ji हमें बचाइए. तो Krishna, Lord Krishna immediately appears out of nowhere. They see that he is on his rath, he is coming, and then he comes to the door and he says, क्या हुआ? फिर भगवान ने कहा कि अभी बाद में बात करेंगे. I'm very hungry. आई एम वेरी हंग्री, प्लीज फीड मी समथिंग. एंड तो द्रौपदी माता कहती है भगवान जी यही तो प्रॉब्लम है, कुछ खाने को बचा नहीं है, मैं आपको वही बता रही. तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, दिखाओ, वो दिखाओ मेरे को, बर्तन दिखाओ. तो he took the Akshay Patra, and then in that he was looking, and Srila Prabhupada has written in the purport, he found remnant of some vegetable and he ate it. And I remember जब हम लोग छोटे थे, when we were small, in Doordarshan it used to come, अन्न का एक एक दाना सुख देगा मुझको मनमाना. Lord Krishna sees a one grain of rice in there and eats it, and he says, वाह कितना स्वादिष्ट है, कितना टेस्टी है. And he burps and he says, पेट भर गया. At that time, same time, all these disciples and Durvasa Muni hits himself, 10,000 disciples and Durvasa Muni, they are bathing in the river, and then they were supposed to come to have the prasadam, but their tummy is filled up and they are satisfied and they burped and they're like, oh my God, we can't eat anything. इट्स सो एम्बैरेसिंग. हमने उनको बोला है कि आप बना दो प्रसादम, और हम आ रहे हैं अभी, एंड नाउ वी कांट ईट एनीथिंग, देयर इज नो स्पेस इन द टमी. एंड देन दे क्वाइटली लेफ्ट, दे जस्ट फ्लेड फ्रॉम देयर. They never came to Yudhishthira Maharaj. So there's so many learnings from this verse and this pastime. So one thing that throughout we are seeing, that Arjun is remembering कि भगवान जी जब ये इंसिडेंस हुआ था तब आपकी मदद से भगवान ने मेरे को मदद किया था, उसीलिए मैं कर पाया. जब दुर्वासा मुनि आए थे उन्हीं की वजह से बच पाए. जब लड़ाई हो रही थी तो मैं भीष्म को हरा नहीं सकता था, पर आपकी वजह से हरा पाया. ही इज नॉट रिमेम्बरिंग मेरे को 14 साल का वनवास मिला, मुझको, हाँ मेरे पापा का थ्रोन था, उन्होंने जबरदस्ती ले लिया, हम लोगों का बर्थ ही जंगल में हुआ. So if we compare the lives of Duryodhan and Arjun, Duryodhan lived a life of luxury. He was born in the palace, he was a prince, but he was forever complaining. He wants everything. एक गांव भी नहीं दूंगा, एक सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा. On the other hand, we look at Pandavas. Pandavas were born in the jungle. They didn't have anything. They came to the kingdom after some time, and they were mistreated by the person who was supposed to protect them. Dhritarashtra was ignoring them, and he knew that his son Duryodhan and Dushasan, they are doing illegal activities, but he never stopped them. He knew everything. He was involved in trying to burn them, everything. बट हम लोग देखते हैं कि अर्जुन कभी कंप्लेन नहीं कर रहे. लाइक इफ यू लुक 80-90% ऑफ अर्जुन लाइफ इज फुल ऑफ मिजरीज, बट ही इज चूजिंग एंड रिमेम्बरिंग दोज थिंग्स जिसमें वो देख रहा है कि भगवान जी आपने मेरे को हेल्प किया. एंड दिस इज सिमिलरली कुंती महारानी. इफ यू कंपेयर कुंती महारानी लाइफ टू गांधारी माता, तो गांधारी lived a life in the kingdom all the time as a queen. कुंती महारानी is roaming in the jungles, उनके बच्चों को मारने की कोशिश कर रही है. But still we read कुंती महारानी prayers a little while ago. She is remembering only the graciousness of the God, only she's grateful, only grateful. So, and this is a first important learning for us. How can we know if we are a devotee? हम अपना, how can we judge ourselves whether we are a devotee or not?
जब हमारे साथ कोई बुरी चीज होती है तो हम भगवान को कंप्लेंट करते हैं जाके कि भगवान ये क्यों हो रहा है, मैं चैंटिंग करता हूं फिर भी मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, या फिर वी जस्ट टॉलरेट दैट थिंकिंग इट्स आर कर्मा। ब्रह्मा जी ने बताया है भागवत में, दैट ब्यूटीफुल वर्स इज देयर, एवरीबडी कैन रिपीट इफ दे वांट। इट सेज तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमानो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाक्वपुर्भिर्विदधान् नमस्ते जीवेत यह मुक्तिपदे सदाय भाग। तो ब्रह्मा जी से तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो, पेशेंटली द devotee is waiting for the mercy of the Lord. Bhunjan ev atmakritam vipakam. So all the miseries that are coming, the devotee is very clear about it कि ये तो मेरे कर्मों का फल आ रहा है, इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। एंड ही इज टॉलरेटिंग पेशेंटली। एंड व्हाट इज ही डूइंग एट द टाइम? हृत वाक वपुर्भिर विदधान नमस्ते। प्रॉब्लम आ रहा है फिर भी वो अपने हाथ जोड़ के, हृत अपने हैंड से, वाक अपने वर्ड से, वपुर अपनी बॉडी से भगवान को हमेशा बाव डाउन करता है। भगवान जी थैंक यू सो मच, I did so much bad karma, but because of your mercy, I am not getting so bad results. You are just absorbing the majority of the bad result and letting me have a token just for my learning. This is the mentality of the devotee. जब बुरी चीज आती है तो वो कहता है कि भगवान मेरे कर्मों से तो मुझे बहुत गंदा आना चाहिए था, लेकिन आपने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, एंड यू आर जस्ट लेटिंग इनफ बैड थिंग्स कम इनटू माय लाइफ सो दैट आई लर्न अ लेसन विच इज फॉर माय गुड। और जब कोई अच्छी चीज आती है तो वो 100% कॉन्फिडेंट होता है कि दिस इज द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। सो वी कैन जज आवर सेल्स वेदर वी आर अ डिवोटी और नॉट बाय लुकिंग एट आवर ओन एटीट्यूड। Nobody else needs to judge us. We should judge ourselves. So this is the learning. The second lesson that we learn from this pastime is when Lord is satisfied, everyone will be satisfied. We can be 100% sure of that. So there's a nice verse in Bhagavatam which Srila Prabhupada quotes all the time, which is this one. Yatha taror mula nishechanena tripyanti tatskanda bhujopashakha pranahuparat yatha indriyanam तथैव सर्वर्हणमच्युतिज्या यथा तरोर मूल निषेचनेन। Taror is the tree and mool is the root of the tree. So when we water the root of the tree, tripayanti tat skand bhuja upashaka. Tripayanti means satisfied. What is satisfied? Skand, the whole stem of the tree. Bhuja, the branches of the tree, and upashaka, small branches and leaves of the tree. When we water the root, everything is satisfied. And the second example that is given is yatha pran upaharat ta indriyanam. Just when we eat and satisfy the stomach, all the other senses, working senses, knowledge acquiring senses, eyes, ears, they get nourished and satisfied when we are feeding the. Similarly, when we are feeding the Lord, when we are praying to the Lord, all the other demigods, all the other people will get satisfied. We should be 100% sure of this fact. जब हम लोग, वन एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आई वाज थिंकिंग, जब हम लोग भगवान जी का फेस्टिवल होता है, जन्माष्टमी है या फिर रामनवमी है, और हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो जब प्रसादम टीम व्हेन दे आर कुकिंग प्रसादम, वी आर नॉट अलाउड टू टेस्ट द प्रसादम। We are just making the prasadam. हम chanting on कर देते हैं, we are trying to chant and make the prasadam, and then when we put the bhoga, we are praying, Srila Gurudev please, Srila Prabhupada please, ऊपर तो चैतन्य महाप्रभु प्लीज लेके जाओ, श्रीमती राधा रानी ऑफर करती है फिर भगवान जी को। सो व्हेन वी आर डूइंग ऑल दीज मंत्रास, नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले, and we are doing all these mantras for bhoga offering, what is happening there actually is our Gurudev is offering to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada is taking to his Gurudev. Through parampara, it is reaching Mahaprabhu. Mahaprabhu takes it to Lord Krishna. वहां पे राधा रानी, श्रीमती राधा रानी is actually, she's inspecting the prasadam. कि कैसा है ये? Is it good enough to offer to Lord Krishna? And then she tastes it and then she thinks, oh, okay, इसमें तो नमक कम है, नमक डालेगी उसमें. She makes it correct.
and then she offers to Lord Krishna. And that's why, अभी आप रेस्टोरेंट में जाओगे, they will taste the food so many times while they are making it. Devotees never taste it. They cook for 500 people, 1,000 people. Never is the prasadam not tasty. Prasadam is so tasty. And the thing is, when Lord is satisfied, everyone is satisfied. Melbourne temple is feeding so many people every day. On the weekend, so thousands people come. But they are so satisfied after eating prasadam. Why? Because by the mercy of the temple president, so good ingredients, A1 इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं मेलबर्न के मंदिर में, और भगवान को ऑफर करते हैं विद द भावा दैट बेस्ट हैज टू बी ऑफर टू द लॉर्ड, एंड लॉर्ड इज सेटिस्फाइड. एंड व्हेन लॉर्ड इज सेटिस्फाइड, then there is nobody else who will not be satisfied. So that is a basic principle we should learn. If our bhakti is very good, our family members will be happy. If our bhakti is good, the people will be happy with us. अगर लोग हमसे हैप्पी नहीं है, इसका मतलब अपने हमारी भक्ति में कमी आ रही है. We have to ask from our seniors कि क्या गड़बड़ हो रहा है. So that is very important learning. And the third lesson that we can see from this is, ये जो दुर्वासा मुनि है, he is a very perfect muni and he's Shivansh. But when we look at this past time, दुर्वासा मुनि के साथ और भी past time हुए थे. अम्बरीश महाराज वाला जो past time था, everybody must know that past time ना, कि अम्बरीश महाराज is a pure devotee of the Lord. We quote his example. नवदा भक्ति सारे के सारे 9 parts he does perfectly. And Durvasa Muni comes and tries to trouble Amrish Maharaj. And Amrish Maharaj, he's so humble. He's just there with folded hands. And Durvasa Muni wants to kill him. But when he produces that demon, Sudarshan Chakra comes and kills the demon. And he's behind Durvasa Muni. And Durvasa Muni is running everywhere अपना जान बचाने के लिए. वो ब्रह्मा लोक गए. ब्रह्मा जी ने कहा, आउट ऑफ सिलेबस, आई कांट antagonize Sudarshan Chakra. It is beyond my power. Then he went to Shivji and he says, मैं तो आपका अंश हूं, मेरे को बचा लो. And Shivji कहते हैं, I can't save you from Sudarshan Chakra. You have to go to Lord Vishnu. लॉर्ड विष्णु के पास जब वो गए तो लॉर्ड विष्णु ने कहा, अहम भक्त प्रदान पराधीनो असंत अस्वंत ए भी साधवा दुजा. वो कहते हैं कि मैं अपने भक्त के पराधीन हूं. भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि इट इज, आई कांट स्टॉप. आई डेंट इवन ऑर्डर सुदर्शन चक्र. मैंने तो बोला भी नहीं है. तो दुर्वासा मुनि कहते क्या करूं फिर मैं. तो विष्णु भगवान ने कहा कि आप डिवोटी के पास जाओ, जिसका आपने अनादर किया, उसके पास जाके उसी से माफी मांगो. 1 साल के बाद दुर्वासा मुनि वापस आए, अमरीश मुनि के पैरों में गिरे. अमरीश महाराज इज स्टिल विथ फोल्डेड हैंड्स. ही इज सेइंग ही डिडंट इवन ईट फॉर 1 ईयर. एंड अमरीश महाराज प्रेड टू सुदर्शन चक्र कि अगर मैंने कुछ भी अच्छा काम किया है पूरे लाइफ में, तो आप प्लीज दुर्वासा मुनि को छोड़ दो. एंड सुदर्शन चक्र डिसअपियर्ड. लर्निंग इज, वैष्णव अपराध इज a very, 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 very serious अपराध. So even if somebody is as powerful as Durvasa Muni, अगर हमने वैष्णव अपराध किया, श्री चैतन्य महाप्रभु ही सेइंग इन चैतन्य चरितामृत. तो चैतन्य चरितामृत में वो श्लोक आता है ना, ब्रह्मांड ब्रह्मिते कौनु भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज. तो हम में से कोई, हम लोग घूम रहे हैं इस दुनिया में पागल की तरह, इधर उधर ऊपर नीचे. बट समटाइम्स बाय मर्सी, बाय लक, वी एनकाउंटर द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. किताबें बांटते हैं डिवोटीज, दे आर डूइंग सो मेनी प्रीचिंग एक्टिविटीज, वी सी देम, and we get a bhakti lata ka beej from them. Okay, now it is our sweet will whether we decide to water it or not water it. We can ignore it, वो तो पड़ा रहेगा बीज. But if we water it by shravan kirtan, if we are listening to sadhus, devotees, the बी वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, धीरे धीरे उसकी लता, भक्ति लता बनती है, and then it's growing. And if we keep on doing it, it grows out of the Brahman. It goes through the Vaikuntha, through the Viraj river, and it reaches Golok Vrindavan, and it reaches the lotus feet of Lord Krishna. Slowly, if we keep watering it, it will reach the lotus feet of Lord Krishna directly. But Mahaprabhu compares this Vaishnava Aparad as he says, Yadi Vaishnava Aparad उठे हाथी माता छिंडे व उपाड़े याय सुखी याय पाता. वो कहते हैं अगर ये जब आप भक्ति कर रहे हैं हम लोग, if we do Vaishnava Aparad, it is like a mad elephant has come into the nursery where the plants are and he's broken everything. This plant is very fragile, very fragile. हाथी 1 सेकंड में बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देता है.
भक्ति लता का बीज किधर बचेगा? So if we, even if we are doing bhakti very sincerely, if Vaishnava aparadh happens, bhakti will go. We will not even feel like chanting. So Vaishnava aparadh is to be avoided on all accounts. So we have to pray to the Lord every day कि भगवान जी please मेरे को give me this mercy, give me this benediction that I do not offend any devotee. And who is a devotee? कौन है डिवोटी? महाप्रभु से क्वेश्चन पूछा था. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय फ्रॉम महाप्रभु. वन पर्सन आस्क्ड द सेम क्वेश्चन 3 years consecutively. First year Mahaprabhu said, anybody who has uttered the name of Krishna even once in any of their lifetimes, he is a devotee of the Lord. तो उससे क्या समझ में आता है? We cannot offend anybody. In Bhagavad Gita also Lord says anudveg karam vakyam satyam priyahitam chayat. So when we are talking to anybody, whether it's a devotee or whether apparently it's not devotee, at the end of the day it's he or she or anyone is a child of the Lord. If we are rude, if we are bad to anyone, Lord doesn't like it. Krishna doesn't like it. It doesn't bring a smile on his face. So the only way to be safe is to not offend anyone. And when somebody is saying bad things to us, we pray to the Lord, Bhagwanji, please give me the strength to tolerate this. Please give me the strength so that I don't antagonize this person. Please give me the strength so I don't react to this person. That is the only way of being safe. Otherwise, we can't be sure कि हमसे वैष्णव अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है. So these are the few points I can see from this verse, devotees. If there's anything else that I've missed, please feel free to unmute and say up, talk up. Otherwise, we'll go to verse 12. Shiva Prabhu, can you please request some devotees to read this verse and the translation? Sure. Just to give a chance, sloka by one person and then the translation by another. So I'll just pick, for today, we'll just pick usual Anuradha Mataji for the Sanskrit, and Bimal Prabhu or some, who is there? Rohit Prabhu, maybe. Rohit Prabhu for the translation. We'll try to give rotate to everybody. Hare Krishna, everyone. I will pronounce. यत्तेजसा था भगवान युधिशूलपाणिर् विष्मापिता शरीर जो अस्त्रम अदान्य जम्मे अन्ये अपि चाहम् अमुनेव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्रा भवने महद आसनार्धम्. हरे कृष्ण. Hare Krishna, everyone. It was by his influence only that in a flight I was able to astonish the personality of God Lord Shiva and his wife, the daughter of Mount Himalaya. Thus he, Lord Shiva, became pleased with me and awarded me his own weapon. Other demigods also delivered their respective weapons to me, and in addition I was able to reach the heavenly planets in this present body and was allowed a half elevated seat. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhuji. Thank you very much, Mataji. So, what Arjun is saying here is it was by his influence only. Who is his? Lord Krishna's influence only, that in a fight I was able to astonish the personality of God, Lord Shiva, and his wife. In the translation itself, we can pick up, in the first line itself, we can pick up two very important points. भगवान के लिए हमेशा अर्जुन इज सो ग्रेटफुल टू द लॉर्ड फॉर एवरीथिंग. ही इज 100% क्लियर. ही इज नेवर इन अंडर इल्यूजन कि मैं इतना पावरफुल योद्धा हूं, मैंने हरा दिया, मैंने शिव जी को हरा दिया, आई एम सो पावरफुल. ही इज नेवर अंडर दिस इल्यूजन. ही इज ऑलवेज वेरी वेरी कॉग्निजेंट टू दिस फैक्ट. इज वेरी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि जो भी मैं कर रहा हूं सिर्फ भगवान की इच्छा से कर पा रहा हूं. ऑल द एनर्जी इज लॉर्ड्स एनर्जी. ही हैज गिवन मी दिस एनर्जी. Bhagavad Gita, chapter 7, Lord Krishna says, na, Bhumi, Apa, Nala, Vayu, Kham, Mana, Buddhi, Evacha, Ahankara, Iti, Yamme, Binna, Prakriti, Ashtada. He says, Buddhi, Buddhi, Matam, Asmi, Tejas, Tejas, Vinamaham, Balam, Balavatam, Asmi, Tejas, Tejas, Vinamaham. So these instructions were given to Arjun, but he knew them already. He knew them already. These were given for our benefit. But the point to learn is that we sometimes can become proud. I did this. I'm so good. I'm so good at
I know so many shlokas, I'm so good at kirtan, मेरा प्रसादम कितना अच्छा बनता है. But we learn from Arjun, he's a world famous warrior. Everybody tells his name. He's defeated Lord Shiva. You know, लॉर्ड शिवा को हराया उसने, और वो कह रहा है कि ये सब भगवान की दया से हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं है. सो दिस इज सो इंपॉर्टेंट दैट एवरी टाइम वी रिमेंबर कि मेरा, इफ वी रिमेंबर दिस सिंपल फैक्ट कि हमारे पास कुछ भी नहीं है. We are a Jivatma. We have been given this body by the mercy of the Lord. We have been given any gifts that we have been given by the mercy of the Lord. And they're temporary, they will be taken. If I'm very beautiful, after 20 years, I will not be very beautiful. If I've got a great memory, after some years, my memory will go weak. So, whilst I have this gift, let me use it for the service of the Lord. Whilst I have this gift, let me not be proud. That's very important. I can't be proud if I know this knowledge. And second thing is, everybody else who has been given these things, that is also Krishna's energy. So instead of being jealous or envious, if somebody is doing an excellent service, we can look at it. Wow, देखो कृष्ण भगवान जी इस जीवा से कितने खुश हैं, उसने भगवान ने इसको कितनी सारी चीजें दी हैं. We can see Lord Krishna and his presence in that devotee. But if we forget this, then we can be envious and jealous कि वो उसको ऐसे कैसे कर पा रहा है. So we can get rid of pride and jealousy by remembering all these things that Arjun is remembering, right? All the moment he is so grateful to Lord. तो हमेशा बोलते हैं ना, कौशल प्रभु बोलते हैं, वन हु इज नॉट ग्रेटफुल इज अ ग्रेट फूल. शुड राइट इट ऑन आवर वॉल. वन हु इज नॉट ग्रेटफुल इज अ ग्रेट फूल. जब भी हमको प्राइड आ रहा है, हमको ये भूल गए कि भगवान ने हमको दिया है, that time we are acting like a great fool. And the second point, that in the first line, see how he is saying personality of God, Lord Shiva and his wife. So much respect is being offered to Lord Shiva. So if we look in the verse, Arjun is saying Bhagwan Yudhi Shulapani. So we should be very clear on our stance towards other big personalities and demigods. When we are a devotee of the Lord, in no way can we disrespect these demigods. Lord Shiva is all very very powerful. Lord Brahma is the head of, हम लोग ब्रह्म मध्व गौड़िया के संप्रदाय में हैं, तो हमारे जो प्रिंसिपल है हमारे स्कूल के, वो ब्रह्मा जी है. वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दीज थिंग्स. इंद्रा, लॉर्ड गणेशा, ये बहुत हाई पर्सनैलिटीज है, सो वी रिस्पेक्ट देम. All the time we know that they are very very high personalities, but at the same time we don't go to them asking for any help. Whenever we need help, we go to our own father, Lord Krishna. So we don't worship various demigods to please them, but we offer them a lot. अगर हम किसी मंदिर में जाते हैं तो we always pay respectful obeisances, just like we pay to any other Vaishnav. जब भी हम किसी वैष्णव को मिलते हैं, we pay dandavat pranams, we respect them so much. And the way we pray to the demigods, the correct way to pray is not, oh, you are God, you are the best, please give me some this. No, we pray to Hanumanji saying, Hanumanji, you do so beautiful seva to Ramji. Ramji is so happy. Can you please give me 1% of that seva bhava so that I can also try to please the Lord? That's how we pray to the demigods कि आप इतनी सेवा करते हैं भगवान जी की, भगवान ने आपको ड्यूटी दिया, you do it so perfectly, but I'm not able to do it. Please, can you give me some power, some energy so I can please my Lord, I can please my Guru? And that is the way demigods get so pleased. That is these other learnings that we see in this particular verse is लॉर्ड कृष्णा को याद रखना. जैसे हम कहते हैं ना कि सुख में दुख में भगवान को याद रखना है. दिस डिवोटीज आर एक्चुअली डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट. व्हेन दे आर हैप्पी, दे आर सेइंग भगवान आपकी दया से ये सब कुछ हुआ. व्हेन दे आर सैड, दे आर सेइंग भगवान जी बचा लो मुझको इससे. इन ऑल कंडीशंस, डिफिकल्ट टाइम्स और गुड टाइम्स. So there is one rule in Krishna consciousness that I was told when we entered. So there's one verse, it says, Smartavyam satatam Vishnu vismartavyam na jatu chit
सर्वे विधि निषेधा स्युः एतयोरेव किंकरः स्मर्तव्यम सततम विष्णु always remember Lord Krishna, Lord Vishnu. Vi smartavyam na jatuchit. Second rule is never forget rule number one. So first rule is always remember Lord Krishna. Second rule is never forget the first rule. Sarve vidhi nishedasyu. All other rules and regulations in Krishna consciousness. Et yor eva kinkara. Kinkar का मतलब होता है नौकर. इस फर्स्ट रूल के नौकर है सारे. जस्ट लाइक व्हेन वी आर व्हेन समबडी इज इंटरेस्टेड इन प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मार्केट में होते हैं तो दे से देयर इज थ्री रूल्स ऑफ प्रॉपर्टी लोकेशन 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 मींस when you're buying property location is very important then that's the most important thing. Similarly when we are in Krishna consciousness the most important thing is to remember Lord Krishna in every moment. We should remember Lord Krishna. We should not forget Lord Krishna even for one moment. अगर हम कुछ भी ऐसा कर रहे हैं sometimes we can get so engrossed in the activity itself. Sometimes कोई पुजारी होते हैं दे आर शुचि वो नहा के आए हैं भगवान की पूजा कर रहे हैं और गलती से कोई किसी से टक्कर लग गई उनको एंड इज लाइक हे यू आर नॉट शुचि व्हाई डिड यू टच मी शूद्रा व्हाई डिड यू एट दैट मोमेंट ही कांट रिमेंबर लॉर्ड कृष्णा ही इज गेटिंग एंग्री नहीं that means the rule is broken. So just to remain Shuchi, he has forgotten Lord Krishna. Nay, we have to remember Lord Krishna at every moment. All other rules and regulations are subservient to that particular rule. So कितना बच गया 7:05. Okay. Can we try to do one more verse, Prabhuji? Puja Mataji maybe. Puja Mataji recites very nicely. Hare Krishna. Hare Mataji. Translation can be done by pick someone. Shall I begin, Prabhu? Yeah, Mataji, Yes, okay. Prabhu. You do, you do. Text 12. Yat tejasatha bhagavan. Oh, that is done already, right? 13 now. Yeah, text 13. Tatraiva me viharato bhujadanda yugma गांडीव लक्षणम आरति विद्य देवः संद्रेह श्रितयद् अनुभवितम् अजमिध तेना हमादि मुसित पुरुषेण भुम्ना. Hare Krishna. Translation. Do you want me to read the translation as well? Yeah. Okay, read Mataji. When I stayed for some days as a guest in the heavenly planets, all the heavenly demigods, including King Indradev, took shelter of my arms, which were marked with the Gandiva bow, to kill the demon named Navitakava. Nivatakava. O king, descendant of Ajamedha, at the present moment I am bereft of the Supreme Personality of Godhead, by whose influence I was so powerful. Hari Bol. Srila Prabhupada ki jai. Yeah, thank you so much, Mataji. So again, same theme. Arjun is remembering कि जब see Arjun actually got the chance to go to Swarga in the same body. Normally we have to die. We die and then if our karmas are good, we reach Swarga. And there was that king Trishanku. He wanted to go to Swarga. वो स्वर्गा उसी बॉडी में जाना चाहता था एंड देयर वाज सच अ ड्रामा भागवत में वो स्टोरी आता है ही वेंट टू विश्वामित्र मुनि तो वो स्वर्ग भेज रहे हैं ऊपर और इंद्र नीचे भेज रहा है वो बेचारा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहा है बट दिस अर्जुन ही डिडंट इवन वांट टू गो बट बाय लॉर्ड्स मर्सी इज रीच्ड इन द सेम बॉडी इज रीच्ड देयर एंड ही गॉट बेनेडिक्शंस फ्रॉम देयर आल्सो इंद्रदेव ने अपने वेपन्स दिए थे वरुण देव ने अपने दिए थे दे ऑल न्यू कि महाभारत का वॉर होने वाला है द लेसन वी लर्न इज भगवान की भक्ति जब हम करते हैं वी गेट सो मैनी पावर्स एंड बेनिडिक्शंस पीपल आर वांटिंग दे वांट टू बी फेमस दे वांट पावर एंड अ डिवोटी गेट्स ऑल दिस विदाउट इवन आस्किंग फॉर इट लुक एट राधानाथ महाराज लुक एट शिला प्रभुपाद व्हाट डिड शिला प्रभुपाद डू ही वेंट अंडर अ ट्री विज चैंटिंग लॉर्ड्स नेम कुछ लोग आए उनको अच्छा लगा धीरे धीरे कितना बड़ा मूवमेंट बन गया भगवान के मर्जी से गुरुदेव की मर्जी से And Srila Prabhupada is so respectable. I don't think any president of any country will be so respectable, so famous as Srila Prabhupada. कोई आता है जॉर्ज बुश हु नोज जॉर्ज बुश नाउ टोनी ब्लेयर कौन मान जानता है उसको इधर घूमते रहते हैं सड़क पे श्रीला प्रभुपाद व्हेन गुरु महाराज कम्स एवरीबडी इज डाउन ऑन द फ्लोर
So a devotee gets so many material benedictions even without asking. उसको चाहिए नहीं पर उसको मिल जाता है. But he pays no attention to that. So all our desires, whether we want, not want, they will be fulfilled just by doing bhakti. हमको ज्यादा कुछ करना नहीं है. श्रीला प्रभुपाद ने, all the mercy of all the devotees, they've given a very simple program. सुबह उठ के जपा करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. उसके बाद भागवत पढ़ो. उसके बाद भोगा बनाओ, भगवान को ऑफर करो. उसके बाद प्रसादम खा लो. काम में जाओ, भगवान को बोलो, भगवान जी जो भी काम से आएगा मैं आपको ऑफर कर दूं, मेरे को ऐसी बेनेडिक्शन दो. शाम को आओ, भगवत गीता का क्लास कर लो. दोबारा भोगा बना के भगवान को ऑफर करो और थोड़ा चैंटिंग करके सो जाओ. दिस सिंपल लाइफ इफ वी लीड, ऑल अवर डिजायर्स आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड. ज्यादा मेहनत करके बड़ा आदमी बन के ये सब करेंगे, पीपल आर सो अनहैप्पी. यू नो, आई हैव सीन द टॉपर्स ऑफ माय क्लास and all these so hardworking, deserving people, they are not leading very good lives. But normal people like us, who are just very lucky to come into this movement by the mercy of devotees, our lives are so blissful. कोई टेंशन नहीं है, कोई दुख नहीं है, everything is going so beautifully. So this is what I learned, devotees. I'm so अभी टाइम हो गया, so I'm so sorry. बहुत सारे पॉइंट्स मिस किए होंगे मैंने. प्लीज फील फ्री टू ऐड. आप प्लीज उसमें डाल देना. एंड इफ आई हैव डन मिस्टेक्स, प्लीज फॉरगिव मी devotees. I'm so sorry. I'm not like Kaushalnand Prabhu. Kaushalnand Prabhu ने मेरे को बोला तो I have to do this service. So thank you so much, devotees. Please feel free to add anything. Otherwise, we'll Kaushalnand Prabhu. Amazing class, Prabhu. We'll make it. Amazing. Thank you so much. No, thank you so much, Mataji. Thank you so much, devotees, for association. Hare Krishna. Dhanvat pranams. Thank you, Shiva Prabhu. Thank you, Prabhuji. We'll continue for another maybe 5 minutes. Whoever has not talked, never had a chance to say anything in this forum, please raise your hand, unmute yourself, and say something. Because we're not able to give a chance to everybody, but this is your chance. 5-6 minutes. We'll do it in Kausalyan Prabhu's absence. That we'll just share our experiences. Prabhuji, can I say something? प्रभु जी ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा क्लास किया. It was so sweet, so heart touching. And ये मुझे ऐड करना था कि भगवान का constant remembrance के साथ ही ये सब बातें होती हैं. One of your fellow devotees came from Sydney this weekend to Las Vegas. He's still here. And one of the things so sweet he said कि जब भी हम जाते हैं, काम पे भी जाते हैं, तो भगवान का नाम अपने साथ ले जाएं. वो पार्थ सारथी बने थे अर्जुन के. So you can be the Parth Sarthi of Bhagwan when you're driving in your car to work. Have him sit in the passenger seat and take him with you and say, let me be your chariot driver. The car driver, it's me, and I want to drive you. And so you take Bhagwan with you wherever you go to your work in the morning. And when you come back, you can pay gratitude that, Bhagwan, I'm so thankful that you brought me home safe. So I thought that was so sweet that he's saying you take him with you to work. And can you imagine how all your entire day would be when you're taking him with you? Hare Amazing. Krishna. Thank you so much, Padma Mataji, and thank you so much for your blessings. I'm so grateful. Amazing Hare. point. Few more, Prabhuji. We'll have 1 minute each, maybe 3 or 4. Please. Thank you, Prabhuji, for reminding us today that how Lord Krishna absorbs so many of our problems and hardships and lets through, as it were, just enough of those hardships for us to learn our lessons in life. I think that was a very poignant point today. So thank you for that reminder, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you very much, Vimal Prabhu. I'm sorry I could not do many verses today. I'm very slow, but so you could have also done a recitation. You do so beautiful recitation, but I'm sorry, Prabhu. If I may very quickly, humbly add,
today I felt very special. Not that every day is not special, every day is special, but today I think I agree. I would reciprocate with Padma Mataji. It was very sweet. It was very sweet, very heart touching, very heartening. So thank you so much, Prabhuji. Hari Hari. Thank you very much. Dandavat pranams. Thank you, Prabhuji, for the wonderful class, Prabhuji. I just learned the quality of humbleness from you, Prabhuji. You are always so humble No, and Mataji, you very have to ask respectful. my wife. She will tell you how humble I am. Yeah, Prabhuji, like I really learned the good like quality. Like you always be like Dandavat pranams to all devotees and all. Like like it's very nice to hear that, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Mataji, the devotees in this group are so nice. Thank you. I love all devotees. Very special group. I'm very lucky to be part of this group. 7:15 हो गए nearly. Puja Mataji wants to say something, I think. Puja No, Mataji. I was wondering, Anupama Mataji is unmuted and she hardly speaks. Do you want to say anything, Anu Mataji? Thank you, Pooja. Mataji, Hare Krishna, everyone. Thank you, Anshul Prabhu, for letting us, hear you today. Um, the one thing is when we get lot of sankat or lot of challenges in the life, so how Krishna helps us, it doesn't put us, oh, I shouldn't try for anything else, like in any aspect in our life, like work, kids, your own health, whatever, Krishna is there. If you remember it, you can, remove that obstacle and go ahead, right? So that actually finds very positive to do things. You not like get fed up, oh, I can't do it anymore, I'm so, I helpless and all that. So if you remember it, you go ahead in everything. Thank you, Prabhu. Thank you, Mataji. In that respect, actually, I remembered one nice thing. So Mahaprabhu says, na, in Shikshashtakam, कि पादरतां पिनष्टु माम यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव ना परा। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि आप चाहे मेरे को अपने पैर के नीचे कुचल दो, चाहे मेरे को गंदी तरह ट्रीट करो, चाहे मेरे को छोड़ के बाकी डिवोटीज के पास चले जाओ, आई डोंट केयर व्हाट यू डू, यू आर माई प्राणनाथ फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। तो श्रील प्रभुपद राइट्स इन अ परपोर्ट कि कई बार हमारे साथ क्या होता है, कोई बुरी चीज हो गई, हेल्थ खराब हो गया, तो हम लोग कि शिव जी का मंत्र कर रहे हैं या फिर हमें पैसे चाहिए, हम लक्ष्मी माता का व्रत करना शुरू कर दिया। तो श्रील प्रभुपाद सेज इट इज लाइक कोई वाइफ है, वो अनचेस्ट है, उसको मूवी देखना है तो किसी और आदमी के साथ चली जाती है, शॉपिंग करना है किसी और के साथ चली जाती है, पैसे चाहिए अपने हस्बैंड के साथ पास आ जाती है। सो ही सेज दैट इफ व्हेन वी आर लाइक दैट वी आर बिहेविंग लाइक अनचेस्ट वाइफ, बट अ डिवोटी इज लाइक लाइक गोपीज। गोपीज कह रही है, श्रीमती राधा रानी कह रही है कि आप मेरे को चाहे रुलाओगे, चाहे मेरे को दर्शन नहीं दोगे, कुछ भी करोगे, आप ही हो मेरे सब कुछ। एंड दैट इज कॉल्ड अनन्य भक्ति। व्हेन वी डू दिस टाइप ऑफ भक्ति वी बिकम क्वालिफाइड टू सी कृष्णा। है ना, चैप्टर 11 में भगवान कहते हैं कि भक्त्या तु अनन्या शक्या अहम एवं विदो अर्जुना। दान देने से, यज्ञ करने से, वेद पढ़ने से भगवान को नहीं देख सकते हम, बट व्हेन वी आर देयर फॉर कृष्णा एंड सेइंग कि भगवान जी आप चाहे कुछ भी करो, मेरे को आपके You go on mute, Prabhu. वाज आई ऑन म्यूट ऑल द टाइम? No, not all the time. You अच्छा, आई वाज थिंकिंग कितना सारा बोल रहा हूँ कुछ। अच्छा, तो हाँ, दैट्स व्हाट आई सेड कि भगवान जी की भक्ति, दिस इज हाउ वी शुड डू भक्ति एंड वी शुड लर्न फ्रॉम दी। अर्जुन है ना, अर्जुन के साथ कितने प्रॉब्लम हुए, Hmm. पर वो शिव जी के पास नहीं गया, वो भगवान के पास गया। वो कह रहा है कि अगर ये ऐसा हो रहा है तो यही मेरे लिए अच्छा है। रक्षिष्यति इति विश्वासो आत्मनिक्षेप, वो षड्विधा शरणागति है ना, अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जितम, रक्षिष्यति इति विश्वासो आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। सो एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस प्रभुपाद्स ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो ना, हमें ये शास्त्र सीखने को मिलता है। सो वी अंडरस्टैंड अपने मन से तो कोई भी भक्ति हम कर सकते हैं ना कि ओ मेरे को ऐसे करना है ऐसे करना है, बट एक्चुअली दैट डजंट give us much elevation, but when we are doing it properly. Thank you so much, Mataji, for reminding us that. Thank you so much. Hare Thank you so much, devotees.